Hi there, welcome to another channel of mine. So here we have a cold fogger, which is used for fogging OTs, labs, clinics. The problem with this machine is that vapors are not coming out properly. So इस machine में ये fogging machine है, fumigator है, जो clinics disinfection के काम आ रहा है और उसमें से vapors कभी निकलते हैं कभी नहीं निकलते हैं. तो उसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. पहले चला के देखते हैं. देखिए तो आपने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर पे वेपर निकलते हैं, फिर टूट टूट के निकल रहा है. देयर इज़ नो कंटिन्यूस एमिशन ऑफ वेपर्स. इसमें हम ये नोजल में तार डाल के देखते हैं. ये 32 गेज वायर है. दिस इज़ अ 32 गेज वायर टू सी द पेटेंसी ऑफ द नोजल. तो ये देखिए आराम से तार जा रहा है और ये तार जो है इसमें से निकलेगा. दिस वायर विल कम आउट फ्रॉम दिस पाइप. सो दिस पाइप इज सप्लाइंग द वेपर वाटर or the fluid liquid. Now we'll open up this nozzle and see if anything is wrong with it. हम इसको खोल के देखते हैं. So we'll remove this. This lock is the same as that found in the RO. जैसे RO फिल्टर में लॉकिंग सिस्टम होता है वैसे होता है. आपको ये प्रेस करना होता है अंदर और फिर ये पाइप बाहर आ जाता है. अब 12 नंबर पाने से हम इसको खोलेंगे. वील ओपन इट विद 12 नंबर रेंच. आप ये देखिए यहाँ से पाइप टूटा हुआ है. देयर इज़ नो पाइप अटैच टू इट. वो गल के टूट के अंदर गिर गया होगा. द पाइप has got spoiled and there is no attachment of the pipe to this nozzle. So luckily I had this pipe which was left from the RO filter. ये RO filter का pipe है जो RO filter में लगता है. So we'll cut a piece of this. We have already cut a piece of this and we'll attach to this nozzle. And we'll tie something around here so that it doesn't slip away. And then place it back inside and tighten it up. And then we'll secure it. इसको हम कस देंगे. Now we'll attach back this tubing. Just press it in. It'll get locked itself. ये देखिए किस तरह से लॉक हो गई अंदर डालते हैं. अब इसको चला के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं. Let's see if it's working fine. See, it's totally working fine now. So that's all folks for today.